डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के ने कुछ इनिशिएटिव लिए। जैसे पिछले साल हमने इनिशिएटिव लिए थे जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, LMS के ज़रिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए वी ट्राइड टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स। टेली क्लासेस और रेडियो क्लासेस हमने पिछले साल किए थे, और उसके साथ साथ कुछ एरियाज़ हमें बचे हुए थे जहां हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी या उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे। उनको के लिए हमने कम्युनिटी क्लासेस भी शुरू किए, और जिसकी पजीर आराई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी की। इसके साथ साथ हमने इस साल भी हमने कुछ इम्प्रूवमेंट्स की। जूम क्लासेस हमने शुरू की, हमने LMS को और स्ट्रांग बनाया, और हमने रेडियो और टेली क्लासेस शुरू किए। और टेली क्लासेस एक दूरदर्शन के ज़रिए, दूसरे ज्ञान TV के ज़रिए जम्मू से। ये जो LMS है, इसमें जूम क्लासेस में एक दिक्कत होती थी दैट वी सिर्फ हमारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते थे वो इसको मॉनिटर करते थे। दे वर मॉनिटरिंग द थिंग्स ऑफ हिज और हर इंस्टीट्यूशन। बट LMS में मैं आपको भी इंटरव्यू के बाद बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। LMS में वी हैव ए मॉनिटरिंग सिस्टम, 3-tier मॉनिटरिंग सिस्टम एट ZDO लेवल, district level and divisional level. We have monitoring. I have that app in my application. If we will log into that app, we will know this time how many students are logged in, how many teachers are logged in, and what content, what material has been uploaded on the that system. Number 1. Number 2, हम रेडियो क्लासेस हम हफ्ते में 6 दिन करते हैं, 4 क्लासेस रहते हैं। उनकी टाइमिंग हमने पहले ही मुश्तहर की हुई है, और 1 जून से हमारे टेली क्लासेस भी शुरू हुए। जो टेली क्लासेस जो है वो है फ्रॉम 9th to 12th, और जो रेडियो क्लासेस हैं दे आर फ्रॉम 5th to 8th। तो इस सिलसिले हम ये कर रहे हैं। तो अगर इंशाल्लाह पेंडेमिक की रेट, ये पेंडेमिक थोड़ा कम, इन्फेक्शस रेट कम होती है, तो देयर इज़ ए प्रॉपर स्टीयरिंग कमेटी विच टेक्स ए कॉल विच इज़ हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। तो इसमें इनपुट्स लेके, फील्ड से इनपुट्स लेके ये कमेटी डिसाइड करती है वेदर टू रिलैक्स द SOPs, हाउ टू डील विद इट। तो उसमें जो ही कमी आएगी, अगर हमारा जो ही हमारे सारे ज़िले ग्रीन जोन में आते, ग्रीन कैटेगरी में आते हैं, तो उसके बाद ही अगर कुछ रहता है, कुछ रहते हैं, तो वी विल गो फॉर द कम्युनिटी क्लासेस, स्पेशली इन फार फ्लंग एरियाज़, जहाँ एक टीचर अपने ही महल्ले में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल, ही विल टीच द स्टूडेंट्स फॉलोइंग द SOPs। हम सबको पता है कि हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी। जब हेल्थ है तभी हम हैं, एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट। तो इसके साथ साथ जो ही गवर्नमेंट ने एक डिसीजन हमसे भी फीडबैक लिया, एकेडमिशियन से भी फीडबैक लिया, ऑल स्टेक होल्डर्स वेर कंसल्टेड, एंड आपको पता होगा उसमें वो एक बाज़ाब्ता गाइडलाइंस आ गई, ऑर्डर आ गया। तो इसमें कोई मतलब सिर्फ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होता, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होता है, अगर और काम करना होता, तो उसमें हमें टाइम लगता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को घटाने में या टाइमिंग को चेंज करने में हमें टाइम नहीं लगता। ओनली थिंग इज़ दैट मॉनिटरिंग पार्ट हम आज सुबह ही वो डिस्कस कर रहे थे, हमारी टीम बैठी हुई थी कि वी हैव टू मॉनिटर वेदर दीज गाइडलाइंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द प्राइवेट स्कूल्स एंड सरकारी स्कूल, सारे ने ये इम्प्लीमेंट किया या अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दैट सिस्टम वी आर गोइंग टू पुट इन प्लेस आज कल में, ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी वेदर दीज डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट। देयर इज नॉट कंप्लीट अल्टरनेटिव फॉर इन पर्सन ऑफलाइन क्लासेस, देयर इज नॉट, बट वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू कंपनसेट दिस एजुकेशनल लॉस। उसी के लिए हमने ये किया हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है, जैसे बच्ची ने कल कहा कि देयर इज़ मोर स्क्रीन टाइम, एक्टिविटी इधर बैठना है, एक्टिविटी कम, फिजिकल एक्टिविटी कम है, बाज़ार नहीं देखना। जो बच्चे जिनको खाते थे बाज़ार में
وہ نہیں مل رہا ہے ان کو. تو اس کی وجہ سے کہ بچوں کا وہ سٹریس لیولز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ سٹریس لیولز بڑھنے کے کارن یہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے, آؤٹنگ کم ہے, اسکرین ٹائم زیادہ ہے, کتنا اسی کے ساتھ رہیں گے. تو ان سب کو وہ ہماری ایک قوم کی ذمہ داری ہے. ایٹ یور اگر آپ کے بچے ہیں یا اگر ہمارے بچے ہیں تو وی ہیو ٹو سبوں کو اس میں پارٹ لینا ہے. پیرنٹس کو زیادہ, دے ہیو ٹو گیو مور ٹائم ٹو دیئر چلڈرن, دے ہیو ٹو انوالو دیم ان انڈور ایکٹیویٹیز, پینٹنگ, ٹی وی واچ کرنا, لسننگ ٹو میوزک, نماز پڑھنا, یوگا کرنا, یہ ساری چیزیں ان کو اس میں انوالو کر کے, اور تاکہ ان کے دماغ سے برڈن ہٹ جائے کہ ہم باہر نہیں اصل میں جو سٹریس ہے وہ باہر نہ نکلنے کا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, فرینڈس کو اس کے ساتھ میل جول نہیں ہو رہا ہے. تو دس از دا سٹریس. ادروائز اگر آپ اسکول میں دیکھیں گے تو 6 گھنٹے رہتے تھے نا, 5 گھنٹے پڑھائی ہوتی تھی, 1 گھنٹہ بریک ہوتا, اور ایک وہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرتے تھے 1 گھنٹے کے یا آدھے 1 پیریڈ کا. کہ وی ویر ان, ابھی ہم ٹرانزیشن فیز میں, ابھی ہم آلٹرنیٹیوز دے رہے تھے آف لائن کلاسز کی, ابھی ہم اسی میں, سو دیٹ وی میک افیکٹو آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس فار, وی ویر آن ان دیٹ فیز اونلی. تو دوسری سائڈ سے بچی نے دیکھا, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ جو ان کی جو سٹریس لیولز وہ بڑھ گئی ہے, سٹریس کی وجہ سے وہ ان کا وہ باہر آنا, اور اٹ از اے گڈ تھنگ. پہلے ہیلتھ ہے, اس کے بعد ہی, دیٹ از وائی ابھی ہم اس فیز میں تھے کہ ہم ایک اچھا سا آلٹرنیٹیو اس اکیڈمک سیشن کو دے دیں. Why couldn't we understood, we elders or administrators who drove this policy change couldn't understand it before the girl? It was in our mind. اگر آپ نے پرسوں میرا انٹرویو دیکھا ہوگا, میں نے دوردرشن پہ لائیو دیا تھا, میں نے وہاں کہا دس I have addressed this issue there also. ہمارے ذہن میں یہ تھا, بٹ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, ادروائز اٹ واز ان آور مائنڈ. I had already briefed the government. So recently a teacher's son committed a suicide as his father's salary was not paid for years. Why? See, اگر آپ کو میں کچھ ڈاکیومنٹس دوں گا, میرے پاس ابھی ڈاکیومنٹس تھے, یہ ہے ڈاکیومنٹ میرے پاس ابھی یہاں پڑے ہیں. یہ جو ایک اسکیم تھی, یہ سارے بچے, بٹ ان دا انسٹنٹ کیس میرے پاس یہ کیس ہے. پہلے ہمیں اس میں یہ آیا, the subject is a PTM of HM outfit, presently working as government teacher. Moreover, the brother of the subject, namely Umar Ahmed, crossed LOC in year 2017 and is settled there. This is the report of the concerned Bashir Ahmed. ٹھیک, چونکہ following his normal life, he has shunned the path of violence and he is in the mainstream. بندوق سے لے کے قلم اٹھانا, بندوق چھوڑ کے قلم اٹھانا, this is a great change. آپ سمجھے میری بات؟ تو because that is the legitimate, either we have to disengage them, this is the we are taking his services, these are the legitimately earned salaries because he is performing his duties. If God forbid he will be terminated, if God forbid he will, then we will not give him, because as of now he is in our roles. The matter was already taken up with the government, it was already taken up with the government, and فنڈس کی دقت بھی ہوتی ہے کبھی کبھار, اور ساری چیزیں کچھ فارمیلٹیز ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پہلے ہی 29 کو یہ اٹھایا, میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ بھی پہلے ہی 29 کو میں نے اٹھایا تھا گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایشو. تو فائنلی گورنمنٹ ٹوک اے کال اینڈ وی ریلیزڈ دا سیلری وین وی اسٹارٹڈ فرسٹ زوم کلاسز. ٹھیک, تو اس میں ہمیں لگا زوم کلاس اور LMS. جب ہمیں رجسٹریشن ہوئی بچوں کی, ہمیں لگا کچھ بچے 1 لاکھ کے قریب سکول بچے جن کے پاس جو رجسٹر نہیں ہوئی, جن کے پاس اینڈرائڈ فونز نہیں ہے. ٹیکنگ دیٹ پارٹ انٹو اکاؤنٹ وی اسٹارٹڈ ٹیلی اینڈ ریڈیو کلاسز,
and inshallah if the infectious rate is down we will start community classes also. This is why we have, otherwise hum kyun اگر ساروں کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹو یا اینڈرائڈ فون ہوتے تو ہم کیوں پھر ٹیلی اور ریڈیو کلاسز میں جاتے. اسی لیے وین وی سا کہ سم کچھ گڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیو ناٹ رجسٹرڈ دیم سیلوز آن آور سسٹم لرننگ مینجمنٹ سسٹم یا زوم پہ نہیں آ رہے تھے تو وی ٹوک اے ڈیسیجن دیٹ وی شوڈ ریچ ٹو دیم تھرو ریڈیو اینڈ ٹیلی کلاسز. دس از اے جنریشن گیپ. اف یو سی ہمارے زمانے میں یہ انٹرنیٹ یا یہ آن لائن کلاسز اس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں. اگر آپ میرے بچے سے پوچھیں آج ہی از مور ٹیکنوکریٹ دین می, اگر آج بھی مجھے کچھ ڈاؤن لوڈ کر تو میں بچے کو بولتا ہوں. دس از اے جنریشن گیپ. جو پرانے ہم جیسے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, مجھے بھی ٹائپ کرنا اترا نہیں آ رہا ہے, آئی ایم ڈوئنگ اٹ, لیکن جس طرح میرا بچہ ٹائپ کرتا ہے یا آج کل کی یا نئے جنریشن ہر کوئی آج کل کمپیوٹر چلانا جاتا, لیکن جب ہمارے ٹائم میں تھا اس وقت اٹ واز ناٹ, ہمیں پتہ نہیں تھا, بٹ وی ہیڈ ٹو کوپ اپ ود دا سچویشن. بٹ آئی کین ناٹ کمپیٹ ود دا بوائے جو آج کل کمپیوٹر والا ہے, میں اس کے ساتھ دیئر ول بی ڈیفینیٹلی دس از جسٹ اے جنریشن گیپ. بٹ وی آر ایوری بڈی, ایوری ٹیچر, آج ابھی تک ہمیں ایسا کوئی ٹیچر نہیں ملا جس کے پاس اینڈرائڈ فون خود کا نہیں ہے, وہ شکایت ہمیں نہیں ہے. ہاں بچوں کی آئی ہے, بچوں کی آئی ہے. Government is trying to bring technology into the schools. There have been some model high schools, model higher secondaries being constructed or established where all these digital classrooms, digital boards, they are being, and it is a continuous process of upgradation of the technology in every institution. یہ جیسے آپ نے ابھی کہا تھا it takes decades. تو we are in process to upgrade our these schools technology wise. Every school should have toilet and electricity. As of now our 90% schools have, government schools have electricity and this toilet facilities. Yes, ground کہیں کہیں کم ہو سکتا ہے, that will take a huge amount of money, that is a big planning کیونکہ land rates are very high. In case we get state land and میں پہلے ریونیو میں رہا ہوں, ریونیو ڈپارٹمنٹ میں, جہاں پر بھی ہمیں کہیں state land یا کاشت چرائی ہوتی ہے we allot it to the these schools for development of playgrounds. And there is a separate department, supports department, youth services and supports, جو اس چیز کو دوسری سائڈ سے ایڈریس کر رہا ہے, یہ سپورٹس گراؤنڈ یا سپورٹس فیسلٹی ایڈریس کرنے کے. دیر از اے myth کہ گورنمنٹ سکولز میں ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہیں, پرائیویٹ سکولز میں. دس از اے myth, I say this is a myth. جو بھی the first priority of every educated youth is a government service. میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. One who is not selected, is not appointed in government service, his second option is only then private school or private institution. یہ بات نہیں. آپ نے آپ نے پریفر یہ نہیں کیا ہوگا کہ میں ان کو سرکاری سکول میں. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا ہے. There has been an enrollment drive last year, 2 سال پہلے. There has been an enrollment drive to enhance the enrollment in the government schools by telling the public, by going to the public that these are our facilities, this is our academy, these are our teachers, this is our facility. تو اس کی وجہ سے ہم نے اگر 2019 میں ہم نے 1 لاکھ کے قریب انرولمنٹ ڈرائیو کی. And this will be now a continuous process. We have to change our minds. Mindset is to be changed. We have started there have been some attractions for the teachers جنہوں نے اپنے بچوں کو سکولوں میں, گورنمنٹ سکولوں میں, ان کی کئی ٹیچرز کی حوصلہ افزائی ہوئی, ان کے انکریمنٹ
आउट ऑफ टर्म भी किसी को प्रमोशन या उसको अवार्ड से नवाजा गया, ताकि देयर शुड बी सम अट्रैक्शन या एक प्रोसीजर बने, एक वी शुड फॉलो द बाय द एग्जाम्पल्स. किसी ने ये किया, चलो मैं भी अपने बच्चों को. No, this mindset is to be changed at every level, not at the education level only, teacher, parent level, community level. We should highlight our strengths, which we have not done so far. You know the things, how things are going. The first priority was to save lives. Now our whole this attention will be from jo hi ye ho jayega, we will start our this drive again, and we will request the people, we will conduct seminars, we will go for this and these drives off and on in the remote areas or in the Srinagar cities, and we will highlight our strengths so that people are attracted to our. Contractual is only for a specific period of time. They should know what is contractual appointment and what is permanent appointment. If you see, जैसे पहले ही मैंने आपको बोला, ये SSA teachers, they were engaged against a scheme got closed, then government had to take a call to how to address them. But in case of contractual teacher, there is a definite government order. जब इनकी engagement होती है उसमें लिखा होता है this is for 6 months for this academic session. And they can, if they are not able to get the government jobs, they are not able to compete. That means they have to go in the competition. This is not that this is a specific order. अगर आपने किसी contractual का order, it would be definitely for a particular academic session. There is a definite transfer policy of the government. In every April में हमें जो भी मैच्योरिटी होता है, वी हैव टू इशू देयर ट्रांसफ़र ऑर्डर्स. अगर आपने इस साल देखा होगा, हमारे डिपार्टमेंट में एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हमने शुरू की. उसमें हमने इन्हीं से पूछा कि आप अपनी चॉइस 3 चॉइसें दीजिए, 1 2 3. देन वी स्क्रीन दोज रिप्रेजेंटेशन. हमें जब लगा कि जो ओवर सिटीज़ हैं, हमने उनको फर्स्ट प्रेफरेंस. अगर आप देख रहे हैं आजकल ऑर्डर्स निकल रहे, ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स, जिनका सबसे ज़्यादा सिटी है उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं. आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट चीफ एजुकेशन ऑफिसर की वेबसाइट पे जा सकते. एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में हमने सबको जो ओवर स्टेट टीचर्स या लेक्चरर्स जो भी था उनको ट्रांसफ़र किया गया. मुझे नहीं लगता आज की डेट में जो अगर कोई 10 साल से कहीं पे है तो वो वहाँ ही होगा. मे बी देयर कैन बी सम इंस्टेंसेस विच आई वुड रिक्वेस्ट द पब्लिक, अगर कोई बोले मुझे कि ये 10 साल से एक ही जगह है, बट वी हैव टेकन केयर ऑफ, जिनका लॉन्गेस्ट है वी हैव मेड कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाए. अगर आप हमारा रिज़ल्ट देखेंगे पिछले 3 सालों का, इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप 11th to 12th और मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं, it shows definite increasing trend. We are now planning कि हम एकेडमिक रिव्यू करने जा रहे. एकेडमिक रिव्यू कॉन्स्टेंट एकेडमिक रिव्यू हो जाएगा तमाम इंस्टीट्यूशंस का, और हम एक ट्रैक रखेंगे किस इंस्टीट्यूशन का रिज़ल्ट किस तरह बढ़ता है. देयर हैज़ बीन ए कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द रिजल्ट्स ऑफ इन द गवर्नमेंट स्कूल. मास प्रमोशंस में अगर इफ़ देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट आउट, कुछ नहीं, इफ़ वी आर नॉट एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस, तभी इन एक्सट्रीम केसेस मास प्रमोशन होता है. Yes, definitely there has been reduction in the syllabus last year. So, but this year, if we have to reduce the syllabus, we will not exclude the chapters. We will tell the students that this chapter, suppose it was carrying 40 marks, this chapter will now carry 30 marks, but every chapter is compulsory. We will not exclude any chapter, but weightage we will definitely decrease in case it is required.